Hello and Assalamu alaikum. This is me Sadeeq, TEFL and TESOL certified trainer, and you are watching my YouTube channel English with Sadeeq. If you haven't subscribed my channel, so do subscribe it and click on the bell icon to get more informative videos. As you know कि हमने एक सीरीज शुरू की है Jolly Phonics, and it's extremely important. अगर आपने first and second video इस सीरीज की नहीं देखी है, so definitely फिर आपको प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में. So I recommend you कि आप जाए और पिछले वीडियोस जितने भी इस सीरीज के हैं वो आप देख ले, and then come and watch this video. We have already talked about set number first and second and third as well, and today we are going to talk about fourth and fifth set of Jolly Phonics की. So storytelling, gestures और साउंड बनाना और बच्चों के साथ खेल कूद में फन तरीके से हमने इसको समझाना है उनको. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप जेस्चर्स बनाएं और साथ ही आप उसी तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करें ठीक तरीके से, ताकि बच्चों को उसी तरीके से समझ आ जाए. सो वी आर गोइंग टू लुक एट टुडे सेट नंबर 4, एंड इन सेट नंबर 4 वी हैव द फर्स्ट वन साउंड, दैट इज ए. आप किसी को आवाज लगाते हो ना कि इधर आ जाओ, ए, इधर आ जाओ, ए, ओके, ए. Then the second one sound is j, jilly, jilly, jilly. Okay, jilly या जिम, जो भी आप बच्चे को पिक्चर्स से समझाना चाहते हो. So a j. Then the third one sound is अगर कोई ऐसा हो कि उसको कोई बंदा हो उसको चोट लग जाए, राइट, एंड वो कहें कि हम अफसोस करें या वो अफसोस करे, ओ, दिस वन साउंड, ओ. मुझे अगर हाथ पे चोट लग जाए तो मैं कहूँगा ओ. किसी और को चोट लग जाए मैं अफसोस कर रहा हूँ, ओ, राइट, ओके. सो ए j o, and then this one sound is a. And these last one two sounds आप बच्चे को इस तरह पढ़ा सकते हो जिस तरह खुद को डंकी बना के, like e right. So that is the first one set. Then we have the second one set, which is fifth one in this video, and this one sound is z. So honey bee जब बोलती है, so how she does और किस तरह वो आवाज निकालती है, okay. Then this w sound, so w sound में हमें blow करना है अपने हाथ को इस तरह, w. And then we have sound. तो आप खुद को strong बना के भी आप इस तरह कर सकते हैं, strong. Then we have v sound, v, तो vein, v, okay. And आप vein को इस तरह चला के v. And then the last two, they are the same, but ये दोनों sound अगर आ जाए, for example, such as we have cook, right, and here we have soon. So here ये short sound produce करता है, इधर long sound produce करता है. So हमने क्या करना है कि वो crow बन के हमने इस तरह sound produce करना है, okay. So first short and then the long, okay. Now let's take a look once again कि हमें ठीक से ये याद हो. So the first one sound in set number 4 is a. Then we have j, jilly, j, and then o, a. This is a, and this is a, and then e,
E, okay? Then Z, W, ng, V, and this one is okay? So I hope कि इस तरह कोई इशू नहीं होगा, आपको साउंड ठीक से याद होंगे, and जब आप बच्चे को सिखा रहे होते हो, so you can watch different videos, and this one video will be also helpful, and inshallah there won't be any problem. If still you face any problem, so you can write in the comments below. I'll be certainly replying to your comments. Thank you for watching.